Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ब्रिज टाउन बारबाडोस में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी। जी हाँ, और साथ साथ सीरीज 2-1 से जीत ली। इस मैच में वेस्ट इंडीज के कैप्टन शाई होप ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग की दावत दी, तो इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 263 रन बनाए। जी हाँ, फिल सॉल्ट ने जबरदस्त 74 रन बनाए और साथ साथ डैन मूजली ने 57 रन की इनिंग खेली और इस तरह इनकी टीम मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 263 रन बना सकी। जवाब में वेस्ट इंडीज ने मतलूबा हदफ जो है वो 43 ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर, और थैंक्स टू 2 सेंचुरीज ब्रेंडन किंग एंड केसी कार्टी, दे बोथ स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड वन द मैच फॉर द टीम फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट। यस, दे वन द मैच फॉर 8 विकेट्स। तो जबरदस्त सी विक्ट्री वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दे हैव बीट इन अ 3 मैच बायलैटरल सीरीज बाय 2-1। इस मैच में इंग्लैंड जिसको पहले बैटिंग की दावत दी, उसका आगाज देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 10 के स्कोर पे 2 विकेटें गिर जाती हैं, बल्कि आधी टीम 4 खिलाड़ी जो हैं वो 24 के स्कोर पे उनके आउट हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर एक आपको 70 रन की पार्टनरशिप होती है। लेकिन 24 पे जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए तो मेन बैट्समैन आपकी जो है वो वापस पेविलियन। पहली विकेट 9 के स्कोर पे विल जैक्स तीसरी ओवर की तीसरी बॉल पे आउट होते हैं, सिर्फ 5 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल था और 50 का इनका स्ट्राइक रेट। कॉट बाय शाई होप, द विकेट कीपर, द कैप्टन ऑफ द बॉलिंग ऑफ मैथ्यू फोर्ड। फिर दूसरी विकेट 10 के स्कोर पे जॉर्डन कॉक्स आउट होते हैं चौथे ओवर की चौथी बॉल पे। ही वाज आल्सो कॉट बाय द विकेट कीपर शाई होप ऑफ द बॉलिंग ऑफ अल्जारी जोसेफ। दूसरी विकेट 10 के स्कोर पे और 1 रन बनाया जॉर्डन कॉक्स ने, 6 गेंदों का सामना किया। फिर तीसरी विकेट 14 के स्कोर पे जेकब बैथल आउट होते हैं बगैर कोई रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया लेकिन कोई भी रन नहीं बनाया। कॉट बाय रॉस्टन चेस ऑफ द बॉलिंग ऑफ रोमारियो शेफर्ड। और फिर चौथी विकेट जो है वो 24 के स्कोर पे लियाम लिविंगस्टन जो कैप्टन भी हैं और पिछली मैच में जबरदस्त सेंचुरी भी स्कोर की थी और अपनी टीम को मैच जिता के सीरीज बराबर की थी, लेकिन यहाँ पे 14 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 43 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 6 रन बना के आउट हुए। अगेन कॉट बाय द विकेट कीपर शाई होप ऑफ द बॉलिंग ऑफ रोमारियो शेफर्ड। तो 4 खिलाड़ी 10वें ओवर की 5वीं बॉल पे 24 के स्कोर पे आउट होकर वापस पेविलियन। यहाँ पे एक 70 रन की पार्टनरशिप होती है 5वीं विकेट की बिटवीन फिल सॉल्ट एंड सैम करन, और टीम का टोटल लेके जाते हैं 94 पे 26वें ओवर में। इस मौके पे सैम करन आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 40 रन ऑफ 52 बॉल्स, हिटिंग 4 फोर्स एंड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 77। ही वाज कॉट बाय सब्स्टिट्यूट वॉल्श ऑफ द बॉलिंग ऑफ रॉस्टन चेस। फिर उसके बाद से छठी विकेट 164 के स्कोर पे ओपनर फिल सॉल्ट जो हाईएस्ट स्कोरर हैं आखिरकार आउट होते हैं, जहां 74 रन बनाए 108 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से with a strike rate of 68.51, and he was also caught by Joseph off the bowling of Matthew Ford. 7वीं विकेट 207 के स्कोर पे डैन मूजली after scoring 57 of 70 balls, hitting 5 fours and 1 6 with a strike rate of 81.42, was out, caught by Lewis off the bowling of Alzarri Joseph. And the 7th wicket is Dan Mousley at 207. England lost their 7th wicket in the 47th over, and Dan Mousley, after reaching his half century, was out on 57. He scored 57 of 70 balls, hitting 5 fours and 1 6 with a strike rate of 81, and he was also caught by Lewis off the bowling of Alzarri Joseph. While the 8th wicket was fell at 238 in the 49th over, Jamie Overton, after scoring 32 of 21 balls, was out, caught by Lewis of Matthew Ford. He scored 32 of 21 balls with the help of 4 fours and 1 6 and with a strike rate of 152, while Jofra Archer with 38 of just 17 balls remain unbeaten. He hit 2 fours and 3 sixes and his strike rate was 223, and his inning enabled England to reach 263. Yes, the partnership put on 25 in just 6 balls, and Jofra Archer scored 24 of 7 balls in the partnership. So the partnership between Sam Curran and Phil Salt, the 5th wicket partnership between Sam Curran and Phil Salt put on 70 of 94 balls, while the 6th wicket also put on 70 of 90 balls between Phil Salt and Dan Mousley, and 7th wicket added another 43 of 34 balls between Jamie Overton and Dan Mousley, while the 8th wicket put on 31 of 17 balls between Jamie Overton and Jofra Archer, and the 9th wicket
added 25 crucial runs. Yes, 25 of just 6 ball, which enabled England to reach 263 for the loss of 8 wicket in their stipulated 50 overs, and their run rate was 5.26. Looking at the number of boundaries England batsmen managed to hit, they hit 6 sixes, and out of those 6, Jofra Archer hit 3 sixes. And besides 6 sixes, the batsman hit 21 fours, helped them to reach 263 for the loss of 8 wickets. For West Indies bowling, Matthew Forde, 10 overs, 1 maiden, 35 runs and 3 wickets, and his economy was 3.50. Alzarri Joseph, 10 overs, 1 maiden, 45 runs and 2 wickets, his economy was 4.50. Romario Shepherd, 6.1 over, 1 maiden, 33 runs and 2 wickets, and his economy was 5.35. Gudagesh Moti, 10 over, 48 runs and no wicket, with his economy of 4.80. Roston Chase, 10 over, 1 maiden, 42 run and 1 wicket, and Sharfane Rutherford, 3.5 overs, gave away 57 runs without capturing a wicket, and his economy was 14.86, almost 15 runs over, and he was hit for 5 fours and 3 sixes, also bowled 3 wide and 1 no ball. He was very expensive. In reply, West Indies achieved the target for the loss of just 2 wickets in the 43rd over. They lost their first wicket at 42 in the 7th over. Evan Lewis was caught by Rashid off the bowling of Overton for 19. But the second wicket partnership of 209 of 203 balls helped West Indies cruise to victory. And in the partnership, Brendan King scored 86 of 95 balls, while Keacy Carty made 118 of 108 balls. And this partnership took their total from 42 for 1 to 251 for 2. And at that time, Brendan King lost his wicket in the 41st over after reaching his century. He scored 102 of 117 balls, hitting 13 fours and 1 6, with a strike rate of 87, and he was bowled by Reece Topley. In the end, Keacy Carty remained unbeaten with 128 from 114 balls, hitting 15 fours and 2 sixes, with a strike rate of 112, and he was in the end supported by the captain Shai Hope, who also remained unbeaten of 5. So West Indies cruised to victory in the 43rd over for the loss of just 2 wickets. Number of sixes, West Indian batsmen hit 4 sixes, but when it came to 4, the batsmen hit 34s and 4 sixes, and they reached target in the 43rd over for the loss of just 2 wickets, winning the match by 8 wickets and the series by a 2-1 margin. Looking at the England bowling, Jofra Archer, 9 over 54 run and no wicket. Reece Topley, 9 over 55 run and 1 wicket. Jamie Overton, 4 over 17 runs and 1 wicket. Adil Rashid, 10 over 51 runs and no wicket. Liam Livingstone, 5 over 36 runs and no wicket. Sam Curran, 3 over and 23 run no wicket, while Jacob Bethell, 3 overs for 26 runs. Brendan King, who scored 102 of 117 ball, was declared man of the match, while Matthew Forde, who scored 23 runs in the series and capturing 8 wickets, was declared player of the series. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.